Matujim, you're watching Morning Pulse on Hornbill TV. The Bangladesh government has formed a 9-member commission to investigate last week's crash on its Air Force training jet into a school here that killed 34 people, mostly students. According to the report, the F-7BGI aircraft, a training fighter jet manufactured in China, experienced a mechanical fault moments after takeoff and crashed into a 2-story building of Milestone School and College in Dhaka's Uttara area last Monday. The probe commission, headed by former Secretary AKM Zafarullah Khan, has been asked to submit its report within 4 weeks, cited a Cabinet Division Gazette issued on Sunday. The other members include a retired Air Vice Marshal, 3 additional secretaries from 3 ministries, the Dhaka Divisional Commissioner, an urban planner, and a professor of the Mechanical Engineering Department of the Bangladesh University of Engineering and Technology. The probe commission will examine the cause of the tragic crash, assess damage and casualties, and determine the responsibilities. It will assess the loss of lives and injuries suffered by students, teachers, and others, and determine the extent of all damages. Additionally, it will review the construction of Milestone School and College as well as other structures near the airport, assess the legal and administrative aspects concerning the location and safety of flying zone, and make recommendations to prevent such accidents in the future. A dreaded gangster from Bihar, Dablu Yadav, 45, who was wanted in over 24 cases of murder, kidnapping, extortion and armed robbery, was shot dead in an exchange of fire with the Uttar Pradesh Special Task Force and Bihar police in Hapur late on Sunday. Yadav, who carried a Rs 50,000 cash reward for any information leading to his arrest, was the prime accused in the abduction and murder of Vikas Kumar, the Begusaria block president of Hindustani Awam Morcha, in May this year. Sushil Gule, SSP STF, said that on the night of 27 to 28 of July, an encounter between some miscreants and Noida STF, Bihar and Hapur police in Hapurville district. In this incident, a miscreant was injured and was admitted to the hospital, where he later died. He has been identified as Dablu Yadav. He had a reward of Rs 50,000 on his head and was involved in numerous criminal cases. दिनांक 27/28 जुलाई 2025 की रात्रि में थाना क्षेत्र सिंभावली, जिला हापुड़ में नोएडा एसटीएफ की टीम और बिहार और हापुड़ पुलिस की टीम की कुछ बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको इलाज हेतु अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। इस बदमाश की पहचान डब्बू यादव पुत्र सूर्य नारायण यादव, निवासी थाना साहेबपुर कमाल, जिला बेगूसराय और बिहार के रूप में हुई है। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हुई तो ये पता चला कि यह अभियुक्त बिहार में बेगूसराय जिले से वांटेड है और इसके ऊपर 50,000 का इनाम है। इसके द्वारा इससे पहले कुल 24 अपराध किए गए हैं, जो इसके आपराधिक इतिहास में दर्ज है, जिसमें 2 मुकदमे हत्या के हैं, 2 मुकदमे लूट के हैं, 1 मुकदमा डकैती, 6 मुकदमे हत्या के प्रयास के हैं और 2 मुकदमे रंगदारी के हैं। यह एक गैंगस्टर अपराधी था जिसका जिला बेगूसराय और आसपास के एरिया में आतंक था, और इसलिए इसके खिलाफ गैंग भी पंजीकृत कराया गया था, जिसका रजिस्टर्ड गैंग नंबर A121 है। इस अपराधी द्वारा जो प्रमुख कांड किए गए हैं उनका विवरण इस प्रकार है। 2014 में अभियुक्त डब्बू यादव द्वारा योगेंद्र यादव उर्फ मंगी यादव के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया था, जिसमें उसको गोली लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसके संबंध में हत्या के प्रयास का मुकदमा 2014 में दर्ज हुआ था। इसके अलावा 2015 में अपराधी डब्बू यादव द्वारा रूपेश यादव पुत्र कैलाश यादव, निवासी ज्ञान टोला, थाना साहेबपुर कमाल, जिला बेगूसराय, इसके ऊपर रंगदारी वसूली थी और उसके संबंध में भी मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज था। आगे जाकर के 2017 में अभियुक्त डब्बू यादव द्वारा एक महेंद्र यादव नाम के व्यक्ति के ऊपर हमला किया था और उसके ऊपर फायर किया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हुई थी। इसको इसलिए उसने मारा था क्योंकि इस व्यक्ति द्वारा, महेंद्र यादव द्वारा, अभियुक्त डब्बू यादव के खिलाफ न्यायालय में गवाही दी थी।
और फिर जाकर के 24/5/2025 को डब्बू यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना बेगूसराय जिला बेगूसराय के थाना क्षेत्र में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार उर्फ राकेश कदम इनका अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद में उसकी हत्या करके उसके शव को छुपा दिया था। इस घटना के संबंध में इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत था और उसी में यह अभियुक्त वांटेड चल रहा था, जिसके क्रम में इसके खिलाफ 50,000 का इनाम बिहार में किया गया था। तो बिहार पुलिस द्वारा इसके गिरफ्तारी के लिए लगातार मदद मांगी जा रही थी और उसी के क्रम में एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा इसमें अभिसूचना संकलन की जा रही थी और जिसके क्रम में बीती रात में हुई मुठभेड़ में ये घायल हुआ और अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया, जहां पे इसकी मृत्यु हुई। यह एक कुख्यात अपराधी था जिसके खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज थे और बीती रात में हुई वारदात के बाद मुकदमा थाना क्षेत्र सिंभावली जिला हापुड़ में पंजीकृत कर दिया गया है। मानवाधिकार आयोग और माननीय न्यायालयों के निर्देशों का अनुपालन करते हुए जो भी समस्त कार्रवाइयां हैं वो की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई इसमें जिला हापुड़ पुलिस द्वारा की जा रही है। At least 6 people have been killed in a mass shooting incident in Thailand on Monday. As per reports, 4 of the deceased have been identified as security guards at a popular fresh food market in Bangkok. As per news agency Reuters, a total of 6 people are dead, including the gunman who took his own life after opening fire in the busy marketplace. Based on Era 1 emergency medical care, the monitors Bangkok hospitals. The 6 deceased include 4 security guards who worked at a market, a woman and the gunman. The attack took place at Torkor Market, which is a short distance from Chatuchak Market, a major and popular tourist destination in the Thai capital. Worapat Sukthai, Deputy Police Chief of Bangkok's Bangso district, stated that police are investigating the motive. So far, it's a mass shooting, and also said that a gunman took their own life. The Deputy Police Chief added that they are investigating for any possible link between the mass shooting and the current border clashes between Thailand and Cambodia. At least 2 people were killed and 4 others have been injured after a mass shooting erupted outside the Nevada casino on Monday. According to the New York Post, citing the Reno Gazette-Journal, the incident occurred around 7:25 a.m. local time near the valet parking area of Grand Syria Resort in the city of Reno towards the northwest section of the state. Police had detained the suspect after he was injured as he was shot by the police during the incident. Some of the injured are said to be in critical condition. Numerous emergency vehicles, including ambulances, were seen at the scene. Reno City Council member Devon Rees addressed the tragedy on Facebook, expressing sorrow over the loss of life and condemning the ongoing crisis of gun violence in the U.S. He emphasized that while Reno is a strong community, it is not immune to such tragedies and urged that a kind of violence must not become accepted as normal, not here, not anywhere. Further details are awaited. Less than a fortnight back, July 15 to be precise, 2 ministers of Barak Valley, Kaushik Rai and Srinendu Paul jointly inaugurated the much-awaited Kamon Bridge for the anxious public of the region. It has not been a month since the important Gamong Bridge in Qatar was restored to its former glory, but the illegal crossing of overload lorries had started and such serious allegations had surfaced once again. According to the administration's instructions, traffic exceeding 40 tons is completely prohibited according to the bridge's load-bearing capacity. Therefore, senior police authorities including DIG, SSP are patrolling repeatedly to ensure that communication with the valley is not disrupted again.
In the meantime, serious allegations are being made that a section of them is adopting their old methods. A driver on condition of anonymity said that a young man and police personnel is also among the accused. He kept the commission and delivered the rest. He believes that this is not only a violation of the law but also a bad sign regarding the stability of Common Bridge. He demands the administration to immediately investigate, identify the culprits and take legal action. बोले टू नॉइज या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् An eviction drive will soon begin in Sribhumi district, targeting illegal encroachments in reserved forest areas, particularly in Chiragi, Patrakandis, Dulai, Bansarhi Reserve Forest, Radhya Pyari Bazar, Ramkrishna Nagar and Pazari Chera. The Forest Department has issued a one-month notice to illegal occupants in the Chiragi Reserve Forest to vacate their homes, failing which bulldozers will be used for eviction. Ministers Jayanta Malabarua and Srinendu Paul have indicated that strict administrative actions will be taken not only in Sribhumi but also across Barak Valley against illegal encroachments. Minister Paul alleged that lands allocated for refugees from Bangladesh between 1951 and 1971 have largely been encroached upon. He claims that since 2001, organized encroachment has been ongoing with the intent to alter Assam's demographic structure. This issue extends beyond Sribhumi and Patrakandi to districts like Lakhimpur and Golpara. The government has clearly stated that no leniency will be shown to illegal encroachers. Affected areas have been identified and a large-scale eviction drive will commence soon. Minister Barua emphasized that its illegal houses are built in forest areas. Eviction drives will continue. Sribhumi very soon. Ko Hunkala Sribhumi Jelato Hobo, Gute Borakopotaka Jot মানে অবৈধ দখলকারী আছে তেওঁলোক উৎখাত কৰাব আপোনাৰ শ্ৰীভূমি জিলাত আপুনি পাথাৰিয়া দোহালিয়া আপুনি বাচ্চাই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট য'ত যাব তাতে দেখিব গোটেই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কোনবা মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহি দখল কৰিছে ও যে আমি যি কনস্টিটুৱেন্সিৰ এমএলএ বা আজি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মন্ত্ৰীসভা স্থান দিছে পাথাৰকান্দিত আপোনালোকে যদি যায় যেটো দোহালিয়া যি এৰিয়া যেটো আছে দোহালিয়াত আপোনাৰ দোহালিয়া 1 দোহালিয়া 2 দোহালিয়া 3 দোহালিয়া 4 দোহালিয়া 5 পাৰ্ট যেটো তাতে আপোনালোকে এটা বস্তু দেখিব যে ইটো হৈছিল 1951 আফটাৰ পাৰ্টিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ যেটো আমাৰ ইয়ত 1971 তাৰ মাজত যিমান নিৰ্যাতিত হিন্দু মানুহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আহিছিল তেওঁলোকৰ মানে সংস্থাপনৰ কাৰণে দুৱালিয়া ৰেঞ্জ বা আমাৰ যেটো বাজাৰিছৰা তাতে দুৱালদুম এৰিয়া আছে বা আমাৰ তাতে যিমান গভৰ্নমেন্ট এৰিয়া ডিগনিফাইড ৰাধা পেয়াৰী য'ত ঠাই মাটি দিছিলে বা ৰামকৃষ্ণনগৰ এৰিয়াত আজিৰ এই এৰিয়াত যাই দেখিব যে বেলেগ মানুহ আছে আৰু এই যে যিমান মানুহক মানে মাটি দিয়া হৈছিল জবৰদখল কৰি এই মাটিবিলাক দখল কৰিছে তো এই লাষ্ট 2001 to 2016 লৈকে গোটেই অসমত এনেকুৱা কৰিছে যে অসমখন কাশ্মীৰ বনাব যেটো আমাৰ মানে এটা প্ল্যান কৰি আছে যে ডেমোগ্ৰাফিটো চেঞ্জ কৰা পাথাৰকান্দি হোক বা অসমৰ প্ৰত্যেকটা কনস্টিটুৱেন্সি লখিমপুৰ হোক লখিমপুৰৰ শ্ৰীভূমিৰ পৰা মানুহবোৰ তাতে গৈছে যাই তাতে মাটি দখল কৰে তাৰ উদ্দেশ্যটো কি উদ্দেশ্যটো এটাই যে মাটি দখল কৰি তাতে ডেমোগ্ৰাফি চেঞ্জ কৰা আজি আপোনারা দেখিব গোটে আমাৰ শ্ৰীভূমি জিলাৰ পৰা লখিমপুৰ তাতে যাই ঘৰ বনাইছে তাতে যাই মাটি দখল কৰিছে কিমান ডাঙৰ কথা এই কাৰণে পুৰা ইনভেষ্টিগেশন হ'ব লাগে আৰু
এই যিটো আমাৰ এভিকশ্যন প্ৰচেছ এইটো কালি গোৱালপাৰাৰ পিছত লাহে লাহে প্ৰত্যেকটা এলেকাত বৰাক উপত্যকাত বিশেষকৈ ফৰেষ্ট এৰিয়া হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট এৰিয়া যিমান মাটি আছে তাতে ইভিকশ্যন চলাই যাতে মাটিবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত থাকে তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। যদি অবৈধ বেদখল আছে তো উচ্ছেদ হবে, যদি ফরেস্ট ল্যান্ডে কিছু আছে পিজিআরে মানুষ আছে আর আপনারা এই জন্য আমার অসুবিধা হয়ে আছে তাহলে তো উচ্ছেদ হবে, এটা তো কোর্টের অর্ডার আছে। উচ্ছেদ কেউ প্রজেক্ট নাই, কিন্তু ফরেস্টটা হইলো যে ফরেস্ট যদি কেউ অকুপাই করে এটা তো উচ্ছেদ করতে লাগবে, ভবিষ্যতের জন্য তো ফরেস্ট কেউ দিতে পারবে না। পিজিআর ল্যান্ডে যদি কেউ মানুষ থাকে ওটা তো উচ্ছেদ। Christian community has condemned the arrest of 2 nuns from Kerala and a man by Chhattisgarh police on allegations of religious conversion. According to reports, the arrest was made following the insistence of Bajrang Dal members. The 2 Catholic nuns from the Assisi Sisters of Mary Immaculate ASMI were arrested at the Durg railway station in Chhattisgarh on Saturday while accompanying 3 women aged between 18 and 19 from Narayanpur district. The man was identified as Sukhman Mandavi, a resident of Narayanpur. Report quoting Father Sebastian Bhutmatan Visar, General of Raipur Archdiocese, said that the nuns were accompanying the women to place them in a convent in Agra for domestic work. These women were being offered jobs as kitchen helpers with a monthly salary between Rs 8,000 and Rs 10,000. They had the consent letter from their parents and were all above 18 years of age, said Father Pumatam. After the FIR was registered against the 3 people on the insistence of Bajrang Dal members, the women were sent to a government shelter while the 2 nuns and the man were sent to judicial custody till August 18. It has been alleged that no church representatives were allowed to meet the detained nuns and that there is a reason to suspect that the young women were coerced into changing their statements to say that they were being taken against their will. The Congress party, including Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and K.C. Venugopal, have condemned the detention of the nuns. Congress General Secretary K.C. Venugopal has also written to the Union Home Minister and Chief Minister of Chhattisgarh demanding strict actions. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan on Sunday urged Prime Minister Narendra Modi to intervene and ensure justice for 2 Malayali Catholic nuns who were arrested and jailed by Chhattisgarh police after being falsely accused of forced religious conversion by Bajrang Dal members. This is a total, it's an atrocity, I would say. The nuns, the sisters, the Christian congregations, the missionaries, they do such great service to the nation and people at large without even looking which religion anybody belongs to, be it health front, be it education sector. But such nuns, sisters have been charged, attacked by Bajrang Dal, then arrested for no reason, and the sections assigned are shocking. We want to ask, does Bajrang Dal controls the Home Ministry of Chhattisgarh? Is that how the system works there? Do they decide who should be arrested? Can they just attack anyone anytime? So this is very, it is again an attack on democracy. The sisters, the nuns, they do such great service to the nation, to the people, to the poor, to the needy, and they are being attacked, charged with human trafficking, sections like human trafficking and conversion. And this conversion is very, they have done with an intention. There's a conspiracy behind it to divide the people in the lines of religion and to inject the poison, venomous poison of... Defense Minister Rajnath Singh on Monday, while paying tributes to the brave soldiers who sacrificed their lives for the nation during Operation Sindoor, asserted that Pakistan failed to inflict any damage on India's war assets. During the debate in the Lok Sabha on Operation Sindoor, Defense Minister said that soon after Pahalgam attack, the well-coordinated strikes carried out by our armed forces hit 9 terrorist infrastructure targets with precision. In this military operation, it is estimated that over 100 terrorists had their trainers, handlers and associates were killed. Most of these were linked to terrorist organizations such as Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba and Hizbul Mujahideen. He also added that the entire operation was concluded within 22 minutes. Defense Minister Rajnath Singh further said that India paused its action because the pre-decided political and military objectives were achieved, and said that Operation Sindoor was paused under pressure in baseless and in absolute wrong.
अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन के सभी दलों के, मैंने जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शानदार कामयाबी हासिल हुई है उस पर चर्चा करने के लिए आज सदन पूरी तरह से तैयार है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए आज जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वह पीछे नहीं रहे हैं। आज भी वह तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। साथ ही मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूं जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं पूरे देश की तरफ से सेनाओं के सभी जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है, 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसवर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुहिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध 0 टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने राजनैतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के बाहर। अध्यक्ष महोदय, India's young sensation Divya Deshmukh has conquered the FIDE Women's World Cup 2025. Divya created history as she became the first Indian to win the Women's World Cup 2025, beating Gonero Humpy with a score of 2.5 by 1.5 in the tie breaks on Monday at Batumi. With this win, Divya not only claimed the World Cup crown but also fulfilled her final Grandmaster norm, officially becoming India's 88th Grandmaster. Humpy made a mistake by capturing the F-pawn, which changed the tide in Divya's favor towards the final moments of the contest. The Indian player, who were left tied at 1-1 each after the 2 classical games in the final, entered the tie breaks on Monday to decide the ultimate
Winner Divya became the 4th female Indian Grandmaster, following in the footsteps of Hampi R. Vaishali and Harika Thronwali. Divya Deshmukh secures gold, Hampi Koniro pocket silver, while China's sensation Tan Zhongyi finished the tournament with a bronze medal. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV. सबसे नतुन खबर और जानकारी गानी त्यादो पाबी अपनी लगा निजोर भाषा नागामिस्ते